Hello everyone, welcome to economics class. Today we will discuss about the concept of revenue. Yes, what is revenue? Money received by a firm from the sale of a given level of output in the market. Dear students, as we have studied about the concept of total expenditure refers to the expenditure made by a consumer on purchase of a given level of a commodity. That is, total expenditure is equal to P into Q. Similarly, what is total revenue? Total revenue refers to the money received by a firm from the sale of a given level of output. For example, if a firm sells 10 units of a commodity at rupees 10 per unit, then the total revenue will be 100 rupees. So what we can say, total expenditure means P into Q. Similarly, total revenue means P into Q. So keep in your mind, total expenditure refers to the expenditure incurred by a consumer uh, for the purchase of a given level or given quantity of a commodity. Total revenue is the money received by a firm on selling a given level of output. The formula for TR is equal to P into Q. Got it, beta? Now we will discuss about few more concepts. What is total revenue? Total revenue refers to the total sale receipts or receipts from the sale of given output. This is quantity sold into price. So TR is equal to P into Q. Bache, you have to learn this formula. TR is equal to P into Q. For example, if a firm sells 100 units of a commodity at the price of rupees 10, then the total revenue will be rupees 1000. Clear, beta? So, total sale receipts or receipts from the sale of given output by a firm is known as total revenue. Now, what's about the average revenue? This is per unit revenue received from the given level of output or by a firm. So, what is average revenue? This is per unit revenue received by a firm, or you can say revenue or receipt received per unit of output sold. So, what is AR? AR is equal to TR by Q. Now, AR is equal to TR by Q. As we have studied that TR is equal to P into Q. So on substituting P into Q, in place of TR, we will have P by Q into Q. So Q with Q we will cancel. That's why AR is equal to P. So dear students, what is the relationship between average revenue and price? Both are equal. Means average revenue is equal to price of a commodity. What is the relationship between AR and P? Both are similar. कई बार 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू, और फाइंड द रिलेशनशिप. आपको इसी तरह से करना. आप बताओगे AR इज इक्वल टू TR बाई Q. We know TR is equal to P into Q. So substitute the value of TR as P into Q. On substituting, we will get the result AR is equal to P. Now, one more thing you have to keep in your mind. AR and demand curve are the same. It shows the various quantities demanded at various price level. Next chapter में हम discuss करेंगे जब हम अपना परफेक्ट कंपटीशन का चैप्टर डिस्कस करेंगे. वहाँ पर भी हमें ये मिलेगी. व्हाट इज़ फर्म्स डिमांड कर्व? फर्म्स डिमांड कर्व रेफर्स टू द डिमांड फॉर द कमोडिटी produced by the firm, and demand curve shows the relationship between price of a commodity and the quantity demanded of the firm. The same relationship is shown by average revenue curve. So we can say average revenue curve is similar to the demand curve of the firm. इसको हम आगे फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे. Now, what's about the marginal revenue? As we have already studied,
Marginal revenue refers to the additional revenue or change in total revenue by selling an additional unit of output. It refers to the additional revenue earned by the seller by selling an additional unit of output. जब भी marginal term आता है उसका मतलब या तो हम change से लेते हैं या addition से लेते हैं, और ये addition और change क्यों हो रहा है? Because of selling an additional unit of output. So what is MRN? MRN is equal to TRN minus TRN minus 1, और MRN is equal to delta TR by delta TQ. आपने ये सब फॉर्मूलाज किए हुए हैं. मार्जिनल के लिए हम हमेशा ही क्या लेते हैं? टोटल ऑफ n माइनस टोटल ऑफ n माइनस 1. अगर यहाँ R है तो R आ जाएगा, P है तो P आ जाएगा, U है तो U आ जाएगा, C है तो C आ जाएगा. सिमिलरली द सेकेंड, जब हमारे पास सीक्वेंस में होता है तब तो हम ये फार्मूला लगाते हैं, जब सीक्वेंस में नहीं होता तब हम ये फार्मूला लगाते हैं. दैट इज डेल्टा टी आर बाई डेल्टा क्यू. गॉट इट? वन मोर फार्मूला. व्हाट इज टी आर? टी आर इज द एडिशन, सम टोटल ऑफ द एडिशन. दैट इज टी आर इज इक्वल टू सिग्मा एम आर. सो अभी तक हमने टी आर के बारे में दो फार्मूलाज पढ़े. मैं वापस आ रही हूँ. दो फार्मूलाज हमने पढ़े. वन इज टी आर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू. इसको हम एक बार रिमूव इरेज कर देते हैं. दोबारा से फॉर्मूला देखिए. टी आर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू और टी आर इज इक्वल टू ए आर इंटू क्यू और टी आर इज इक्वल टू सिग्मा एम आर. ये तीन फार्मूलाज हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है बेटा. मूव टू द नेक्स्ट. व्हाट इज ए आर? ए आर के लिए भी हमने डिस्कस किया. ए आर इज इक्वल टू टी आर बाई क्यू और ए आर इज इक्वल टू पी. सिंपली पी भी आ सकता है इसमें. सो आपको ये फॉर्मूला भी लर्न करना है. देन वी हैव द नेक्स्ट. दिस इज एम आर. एम आर के लिए आपको दो फार्मूलाज लर्न करने हैं. एम आर एन इज इक्वल टू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1 एंड सेकेंडली एम आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू डेल्टा टी आर बाई डेल्टा क्यू. सो ये फार्मूलाज आपको लर्न करने हैं. नाउ relationship between TR, MR and AR when price remains constant. Dear students, there are two types of market forms. One is the perfect competition, second is imperfect competition. Perfect competition is a market form where price level remains unchanged, means a seller can sell whatever quantity he wishes to sell but only at the constant price level. ये होता है perfect competition. हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिटेल में स्टडी करेंगे अबाउट द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज अ मार्केट फॉर्म वेयर प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट एंड इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन refers to a market form where price of the commodity does not remain constant and more of the commodity can be sold only at reduced price level. इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पर हमने एक ही पॉइंट लेना है. व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट. नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन ए आर, एम आर एंड टी आर कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ टेबल. लुक एट द टेबल. Units of the commodity increases but price level remains constant because under perfect competition price level of the commodity remains constant and does not changes with the change in output. Now as we have already studied, what is the formula of TR? This is P into Q. This is P into Q. P into Q. This is Q. So 10 into 1, 10. 2 into 10, 20, 3 into 10, 30, 4 into 10, 40. Now what is AR? AR is equal to price. AR is equal to P. So पूरा का पूरा हमने as it यहाँ से ले लिया. Now what's about MR? MR means TRN minus TRN minus 1. So first this is 10, 10. 20 minus 10, 10. 30 minus 20, 10. 40 minus 30, 10. Now, what is the conclusion? When, number 1, when price of the commodity remains constant, AR is equal to MR. AR is equal to MR. So, पहला relation हमारा क्या निकला?
AR is equal to MR। और दूसरी हम बात क्या कर रहे हैं, दोनों कांस्टेंट हैं। इसका मतलब जब हम इनका डायग्राम बनाएंगे तो AR और MR कैसा आएगा, AR and MR curve will identical and will parallel to x-axis और horizontally parallel to x-axis, क्योंकि वैल्यूज़ कैसी आ रही हैं, सेम आ रही हैं। और हम TR के बारे में बात करें, टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन आउटपुट बट इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट, क्योंकि इसमें 10 का एडिशन हो रहा है। इसका मतलब बढ़ रहा है लेकिन कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। सो लेट मी रिकॉल। Number 1, when price of the commodity remains constant, number 1, AR is equal to MR. Number 2, AR and MR curve is identical and is horizontally parallel to x-axis. Now what's about total revenue? Total revenue increases at increasing rate with the increase in output. And what's about the curve of total revenue? It is a positively sloped upward rising curve. Why positively sloped? क्योंकि बढ़ता जा रहा है, upward rising values के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। और क्योंकि ये कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, इसलिए टोटल रेवेन्यू कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड विल मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। जब भी हमें किसी कर्व को कांस्टेंट रेट से बढ़ते हुए दिखाना होता है तो हमारी जो कर्व आती है वो 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए अपर राइजिंग होती है। चलिए इसका डायग्राम देखें। This is the diagram. Look at the diagram. Number 1, AR is equal to MR. So AR is equal to MR means the curve is parallel to x-axis. TR increases at constant rate. TR is an upward rising curve. Straight line curve है और कितने का एंगल बना रही है, 45 डिग्री का एंगल बना रही है। So keep in your mind, in perfect competition, when price of the commodity remains constant, AR is equal to MR and the curve is horizontally parallel to x-axis. Number 2, total revenue increases at constant rate. That's why total revenue curve is a positively sloped upward rising curve starting from origin and making an angle of 45 degree. So this is the relationship between AR and MR, then TR and MR when price of the commodity remains constant. So this is the relationship. आपको ये अच्छे से पढ़ना है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं. Now move to the next topic. This is relationship between AR and MR under monopoly and monopolistic competition और प्राइस चेंजेस और अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन. अभी मैंने आपको बताया अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, that is in case of monopoly and monopolistic competition, a seller can sell more of the commodity only when he reduces the price level. जब तक वो प्राइस को कम नहीं करता तब तक वो ज़्यादा बेच नहीं सकेगा. तो हम यहाँ पर क्या बात करेंगे, इफ़ अ प्रोड्यूसर और अ सेलर wants to sell more of the commodity, he will have to reduce the price level. Now, in order to learn about the relationship between TR and AR or TR and MR and AR and MR, it is very essential to make a table showing reduction in price level. Means the first two column indicates if a producer or a seller wants to sell more of the commodity, he will have to reduce the price level. Now, this is the quantity continuously increasing and price level continuously decreasing. Now, how can we find out TR? As we have already studied, TR means P into Q. So, P into Q means 10 into 1, 10, 2 into 9, 18, 3 into 8, 24, so and so. AR is equal to P, AR is equal to P. So as it is हमारी ये टेबल यहाँ आ गई. MR के लिए हमने पढ़ा TRN माइनस TRN माइनस 1. आपको ये फॉर्मूलाज लिखने चाहिए. So first 10 as it is, 18 minus 10, 8,
24 minus 6, this is 6. 28 minus 4, this is 4. 30 minus 28, 2. 30 minus 30, 0. 28 minus 30, minus 2. Now, what we can conclude, when price of the commodity does not remain constant, average revenue is always greater than marginal revenue. Clear, beta? Average revenue is the price and it is calculated from total revenue. So, average revenue is always greater than MR. अगर हम फर्स्ट यूनिट को छोड़ दें, फर्स्ट यूनिट पर दोनों बराबर हैं, इसका मतलब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है. लेकिन AR धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, जबकि मार्जिनल रेवेन्यू तेज़ी से कम होता जा रहा है. Marginal revenue is continuously decreasing and is decreasing at faster rate. Marginal revenue can be zero, can be positive, can be negative, but average revenue is always positive. Average revenue can never be negative. It is because of the reason that average revenue is the price of the commodity, and price of the commodity can never be negative. Price of the commodity can never be zero. So what we can say, AR will be greater than MR. Secondly, MR decreases at faster rate. MR may be zero, may be positive, may be negative, but AR will remain always positive because it is the price of the commodity, and price of the commodity can never be zero, can never be negative. Now what's about the total revenue? Total revenue first increases at diminishing rate. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एडिशन हो रहा है लेकिन कम रेट से हो रहा है. जैसे पहले 10 था, फिर उसके बाद 8 का एडिशन हुआ, फिर 6 का एडिशन हुआ, फिर 4 का एडिशन हुआ. मतलब एडिशन तो हो रहा है लेकिन कम हो रहा है. So what we can say, as long MR remains positive, total revenue increases at diminishing rate. Number 2, when MR is 0, total revenue is maximum. Keep in your mind, when MR is 0, total revenue is maximum. Number 3, when marginal revenue is negative, instead of increasing, total revenue start decreasing. So the relationship between MR and TR can be explained in 3 points. Number 1, as long MR remains positive, TR increases at diminishing rate. Number 2, when MR is 0, TR is maximum. Number 3, when MR is negative, TR increases at diminishing rate. Clear? When MR is negative, TR starts decreasing. So this is about the relationship between AR and MR. Now there is a diagram also. This is the diagram. Look at the diagram. Yes, beta. This is the diagram. Instead of increasing TR from this side, we can start TR from 0 also, because when 0 unit is sold, TR is 0. क्लियर? क्योंकि जब तक हमने कुछ बेचा नहीं है तो हम इसको 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं. जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये, इट इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट. It increases at diminishing rate, achieves its maximum, then start decreasing. When it is maximum, it shows marginal revenue is 0. Marginal revenue may be in first quadrant showing positive, may touch x-axis showing MR is 0, may be in fourth quadrant showing negative MR. On the other hand, average revenue and marginal revenue both start from the same point, because when first unit is sold, AR is equal to MR. AR curve always remain in the first quadrant because AR is the price of the commodity and price of the commodity can never be 0. Clear? And AR curve will always be above the MR curve showing AR is greater than MR. So this is all about the diagrammatical explanation. Now these are the relationship. You must go through the relationship. This is very very important. जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए सारे के सारे पॉइंट्स यहीं पर हैं, बस थॉरोली इनको अच्छे से पढ़ लीजिए. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक.
दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एंड एम आर. द सेम पॉइंट्स जो अभी मैंने रिपीट किए थे 3-4 बार, वही पॉइंट्स हैं. आप ध्यान से इसको पढ़िए. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक. नाउ few more concepts are there. This is about the break even point and shutdown point. What is break even point? Break even point is the point where total revenue of the firm is equal to total cost. Means the firm is capable, if we divide both by Q, then we will have AR is equal to AC. AR means the P. P is equal to average cost. So break-even point is a point where the firm is capable to cover the entire cost, because we have studied AC is equal to ABC plus AFC. तो एक फर्म इतना प्राइस चार्ज कर पा रही है जितनी उसकी कॉस्ट है. मतलब द फर्म इज कैपेबल टू कवर all of its cost. This is the situation of break even point. Now, in the situation of break even point, does it mean that the profit of the firm is zero? No, because the minimum cost covers the minimum profit also. जब एक फर्म अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर फाइनल करती है तो वो उसमें अपने मिनिमम प्रॉफिट को कवर कर लेती है. मतलब एक नॉर्मल प्रॉफिट उसको मिल रहा है इन केस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट. सो इन केस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, because the firm is capable to cover its entire costs, or you can say the firm is getting normal profit, the firm will continue to produce in break even point. मतलब break even point पर firm production को continue करेगी, because the firm is capable to cover all of its costs and the firm is capable to get normal profit. Dear students, keep in your mind, normal profit does not mean zero profit. Now, what's about the shutdown point? Shutdown point is a point where the firm is capable just to cover its variable cost. अगर मैं यहाँ ये कहूँ कि during shutdown point, TR of the firm is equal to total variable cost. अगर मैं इनको Q से डिवाइड कर दूँ तो मेरा बन जाएगा AR is equal to ABC, that is P is equal to ABC. Means the firm is capable just to cover its variable cost. उसको अपनी फिक्स्ड कॉस्ट का नुकसान बियर करना पड़ रहा है. शॉर्ट पीरियड में फर्म के लिए ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि वो अपना सारा कॉस्ट को कवर नहीं कर पाता. मतलब उसको फिक्स्ड कॉस्ट का नुकसान बियर करना पड़ रहा है. अब ऐसे सिचुएशन में द फर्म मे और मे नॉट कंटिन्यू टू प्रोड्यूस, क्योंकि उसको फिक्स्ड कॉस्ट का नुकसान हो रहा है. तो फिक्स्ड कॉस्ट का तो अगर वो प्रोडक्शन बंद करेगा तो भी उसको लॉस होगा ही होगा. अगर वो प्रोडक्शन को कंटिन्यू करेगा तो भी उसको लॉस हो रहा है. सो यहाँ पर फर्म मे और मे नॉट कंटिन्यू टू प्रोड्यूस है. लेकिन अगर प्राइस लेवल इस लेवल से भी कम हो जाता है तो फर्म इमीडिएटली अपने प्रोडक्शन को बंद कर देगा, बिकॉज द फर्म इज नॉट एबल इवन टू कवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट. तो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बच्चे. नंबर वन, in the situation of break even point, because AR is equal to P is equal to AC, the firm will continue to produce because the firm is capable to get the normal profit. During shutdown, AR is equal to P is equal to ABC, means the firm may or may not continue to produce because the firm is capable just to cover its variable cost. But if the price level further falls down और भी कम हो जाता है, it means the firm is even not able to cover its variable cost. That's why the firm will stop the production. तीन चीज़ें, at break even point will definitely continue to produce more. During at shutdown point may or may not. But if the price level falls below this level, the firm will definitely stop producing more. So with this, the topic is over. Dear students, these are the formulas. These are the formulas at glance. ज़रूर लर्न करिए. पीछे भी मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए हैं, सबको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. क्लियर बेटा? नाउ दीज आर द असाइनमेंट्स. 2 questions are there. Explain the relationship between TR, MR
and AR under perfect competition. Then explain the relationship between TR and MR and AR and MR under imperfect competition. Perfect competition means when price of the commodity remains constant. Imperfect competition means price of the commodity does not remain constant. Then this is a table. You are to complete this table by using the formulas. बच्चे जब ये टेबल पूरी करोगे तो ऐसे डायरेक्टिव वैल्यूज़ नहीं पुट करनी. आप नीचे पहले नोट बनाओगे, सारे फार्मूलाज लिखोगे, फार्मूलाज को अप्लाई करते हुए दिखाओगे, उसके बाद इन फिलअप्स को पूरा करोगे. देर आर 2 क्वेश्चंस. आपको दोनों क्वेश्चंस थॉरली प्रिपेयर करने हैं. बाई चांस ये टेबल सेम ही आ गई है बच्चे, आपकी बुक में प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप अपनी बुक में से भी इन क्वेश्चंस को करिए. सो डियर स्टूडेंट्स, do your work properly, stay home, stay safe, be sincere, do your work properly. Goodbye, dear students. Have a wonderful day.